शहीदों की चिताओं में लगेंगे हर बरस मेले, शहीदों की चिताओं में लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। I was always fascinated by the uniform, the color of the uniform, the greens. उस समय लगता था कि देश की सेवा करने का एक ही जरिया है कि आप फौज में भर्ती हो जाओ। 101 was a very cohesive group of brothers. I say brothers because we say that brother from another mother बोलते हैं ना। तो आर्मी की जब ट्रेनिंग होती है बहुत खूबसूरत ट्रेनिंग होती है। When you are giving your sweat, your blood, when I say blood, no, not the one that you give at the borders and all, वहाँ पर कई सारे ऐसे तरीके होते हैं कि ब्लड अपने आप निकल जाता है। तो when you are doing all such activities together, तो ये जो बॉन्ड बनता है that cohesiveness बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। ऐसा नहीं है कि मतलब इतने साल हो गए तो छूट गए, यानी क्लासमेट्स होते हैं, कॉलेज मेट्स होते हैं, वो मेमोरीज ख़त्म हो जाती हैं, दे जस्ट फेड अवे, द रिलेशनशिप ऑल्सो फेड्स अवे। बट ये जो 101 का जो बॉन्ड है ना, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, फेविकॉल का जो बॉन्ड है बहुत स्ट्रॉन्ग फेविकॉल है ये। माई फर्स्ट पोस्टिंग वॉज इन द वैली ऑन द लाइन ऑफ कंट्रोल। I was from the support services, otherwise from the electronics and mechanical engineers, but we do our attachment with the infantry. Kargil is not just a place to visit. It's a place where lots of people have given their lives. Once a thing like Kargil happens, you realize that life is temporary. Today you are there, tomorrow you are not there. The first reaction was anger, the sense of betrayal, because peace talks were going on. सिर्फ 1998 में, if you remember, there were peace talks. जो लोग कारगिल में नहीं थे वो लोग भी सब जाने को तैयार थे। I remember हमारे यहाँ कुक था, he used to make food for us. When he came to know about this, he said कि साहब मैं खाना वाना नहीं बनाऊंगा, मेरे को बंदूक दो, मुझे वहाँ जाना है। I had a mechanic, because I said we were in the support services, we used to repair guns, equipment. So one of the mechanics said साहब ये मेरे से नहीं होगा अभी ये काम, मुझे बंदूक दो, मुझे वहाँ जाना है। So everybody wanted to go there. Everybody wanted to, irrespective of his trade, irrespective of what he was doing, irrespective of his age. People who were 50 years of age, 54 years of age. यार सबको वहाँ जाना था. Everybody wanted to be there. Our army training is such, nothing can impact our morale as such. With every such let down by the enemy, we bounce back very badly. I mean, you have seen it everywhere, whether it's Galwan or Kargil was a very big example. It did not, lower our morale, but it brought a sense of, determination within us. कि नहीं यार अभी तो छोड़ना नहीं है. You're not going there just for our coastmates, for our brothers. We are going there for everybody who was there and who could have been there now but is not there, because they chose to give their life for the nation, for the countrymen, for whatever we call it, नाम नमक निशान। नाम पलटन का नाम, अपने देश का नाम, नमक जो आपने नमक खाया है अपने यूनिट का, अपनी पलटन का जो अपने देश का नमक खाया है, उसका कर्ज जो चुकाना है। निशान जो पलटन का निशान है, हमारे देश का जो झंडा है उसका निशान है। For that, people have given their lives. A part of our heart is there already. We are just going to, unite with that part of the heart, which we are going to leave again and when we go back. So it's a tribute that we want to pay, not only to our coastmates but everybody.